morning, dear students. I am Miss NAVEDA SHAIKH from Brahan Mumbai Mahanagar Palika MCGM virtual class. I welcome all my dear students to another and interesting session. In today's session, we'll be learning something new and interesting from a science textbook. So let's get started. Good morning, dear students. I am Mrs. NAVEDA SHAIKH from MCGM virtual class. I welcome all my dear students to another and interesting session. In today's class, we'll be learning a very interesting chapter from your Science 2 textbook, and the chapter's name is Disaster Management. Now, you have already learned about disaster management in your previous standards. You have learned about the meaning of disaster. You have learned about the various types of disasters like natural disasters, man-made disasters, and apart from that, you have also learned about how are the circumstances that occur during a disaster and how can we overcome them. All right, so that was at a very lower level. When you were in 7th standard, 8th standard, you have learned about that. But today we'll be learning something more about disaster management. How are we supposed to handle the situation, and how does the government and how does the people around us and the higher authorities, how do they take actions and how do they manage the circumstances when a disaster occurs. So let's get started with something new and interesting in this chapter. So for today, we will be learning about what is the meaning of disaster, the types of disaster, effects of disaster, the impact of a disaster in that particular area, disaster management, the nature and extent of disaster, as to what was the intensity of the disaster, we'll be learning about that as well. First aid and emergency actions, and mock drill. So these are a few things that we will be discussing in this entire chapter. Okay, we'll be dividing the chapter into two parts. So we'll be uploading another video related to the topic, and please do watch that as well. So let's understand first the meaning of disaster and the types of disaster. Now, what is the meaning of disaster? We have learned about disaster, a natural calamity or a man-made calamity that happens on a very large scale. Okay, that is said to be a disaster. Variously dangerous events occur many times in the environment. Those are called as disasters. Okay, in our environment, it could be naturally also, it could be man-made also. I'm not talking about only natural disasters like atomic accidents, atomic reactions which takes place, or atomic bombs that are there, nuclear bombs that are there. If that happens, that is a kind of man-made disaster. Apart from that, some of the main natural disasters are floods, wet and dry famine, cyclones, earthquakes, volcanoes, etc. So you have already learned about these disasters in your previous standards. Okay, so we'll be learning few more disasters which haven't been mentioned in your textbooks, but it is very important for you all to understand that these are the things also which come under disaster. So as I talked about natural disasters, the natural disasters are tornadoes, volcano, earthquake, tsunami, forest fire, dust storm, avalanche, drought, thunderstorm, hailstorm, flood, snowstorm, hurricane, sandstorm, sinkhole, windstorm. So these are all different types of disasters that occur all around the world. ओके अब हमारे यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म हम लोगों को सुनाई में देता नहीं है, सैंड स्टॉर्म नहीं सुनाई देता है. वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव सैंड, वी डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ डेजर्ट एरिया. ओके, देर आर डेजर्ट्स इन इंडिया एज वेल, बट हमारे मुंबई में हम लोगों को डस्ट और ये जो सैंड स्टॉर्म है ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता बिकॉज यहाँ पर रेती नहीं है. ठीक है, सो वी डू नॉट एक्सपीरियंस दैट. But in certain countries like when you go to UAE and that side, there are huge sandstorms that occur, and it is a very dangerous situation. If a person is outside, it could be very dangerous for those people. Okay, apart from that, avalanche means collapsing of the snow region and a mountainous region. Okay, that doesn't occur in Mumbai as well. हम लोगों ने ये भी नहीं पढ़े हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती. तो we will be learning about all of
these few of these natural disasters, not all, because you've learned a few about them. We have learned about volcano, we have learned about earthquake, tsunami. We have seen in news also about tsunami, कि tsunami कैसे आती है और किस तरीके से ये इफेक्ट करती है. ठीक है. So we will start with a few disasters. The first one is earthquake. Generally, it occurs due to Earth plates movement. It is caused by volcanic activity. The landslides, mine blasts, and nuclear tests could also result in an earthquake. All right. So it is not necessary that naturally he आए earthquake. There are various activities, human activities that could lead to an earthquake, like nuclear testing. न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है जब, तो ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट a bomb, okay, or various other things related to nuclear test, they are done deep inside the earth surface. ये ऊपर नहीं किया जाता because उसके जो radiations होते हैं those are very dangerous and it is very loud and it could not be done on the surface, and that is the reason they are done underground. Okay, so when they are done underground, that could lead in the movement of the earth's plate. Okay, तो उसकी वजह से भी earthquake आता है and that also results in a disaster. The epicenter is the point on the ground directly above the origin of the tremor. Okay, we have all learned कि कभी भी earthquake एक point से start होता है. ऐसा नहीं है कि पूरी ज़मीन एक साथ हिलने लगती है. एक जगह पर वो हिलने लगती है ज़मीन और वहाँ से जो waves उठती है that results into that particular area that it covers. Okay, so here if you see in this picture also, there is a huge area which has been destroyed because of an earthquake. ओके तो वहाँ पर ऐसा ज़रूरी है ये इतना पूरा एरिया एपिसेंटर था. एक स्मॉल एरिया होता है एपिसेंटर और उसका जो इफेक्ट होता है उसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है डिपेंडिंग कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था वो. ठीक है, अगर अर्थक्वेक ज़्यादा इंटेंसिटी का था तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा और ज़्यादा नुकसान होगी उतने रीजन को. Alright, so epicenter, you have learned about what is the meaning of epicenter in your previous standard. I've explained you that, so I won't go in detail about that. Alright, and it is the worst, it's the worst affected area. The here you can see जहाँ पर epicenter होता है, अगर वहाँ पर buildings है और वहाँ पर localities है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है because वहाँ पे epicenter है, मतलब earthquake वहीं से शुरू हुआ है तो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट होगा और बहुत बुरी तरीके से नुकसान होता है. ठीक है. So there are a few deadly occurrence of earthquakes that have been mentioned here, like the Shanxi in China in 1556. That toll was about 8,20,000 people estimated, okay, and the magnitude, the intensity was about 7.9. Okay, so this is all about a few occurrences that have happened because of an earthquake. The next disaster that we have is avalanche. Now, avalanche means what? It is a rapid flow of snow down a sloping surface. After initiation, avalanche usually accelerate rapidly and grow in mass and volume as they attain more snow. Now, when they entrain more snow means what? Now, remember कि जब भी ये avalanche में क्या होता है, जो snow है वो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरती है तो वो थोड़ा सा एक क्रैक होता है, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ होती है. इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट वेरी ह्यूज, बट क्या होता है ना, ये व्हेन इट कम्स डाउन it starts to take in more snow which is in its way. Along with the snow, all the stones and the rocks which are there, it collects that also along with it. जो भी उसके रास्ते में आता है वो चीज़ वो बढ़ती जाती है और वो चीज़ डिस्ट्रॉय होती चली जाती है. ओके, so avalanches are very dangerous. Why do I say this? Because with the snow, when it starts to fall from the top, okay, initially at the top it is very small, but when it comes down, it can cover humans beings which are there. Okay, नीचे की तरफ जो humans अगर चल रहे हैं या स्कीइंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ एक्टिविटीज कर रहे हैं, what happens is जब ये स्नो नीचे की तरफ गिरने लगती है तो ये इतनी सारी हो जाती है कि लोग उसके अंदर दब जाते हैं. एंड एवरीबडी नोज कि स्नो के अंदर इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज़ अ लेयर, इट इज़ अ वाइट लेयर दैट accumulates over a person, okay, of snow. और snow ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग चिल्ला भी नहीं पाते. People tend to freeze and die. Okay, so that is a very dangerous scenario. So this is also one of a very
a dangerous type of disaster that occurs in the regions where you have mountains covered with snow. All right. A deadly occurrence had taken place in Yange in Peru in 1970. It originated from Mount Huascarán, okay, and Andes. That was in Andes. Andes एक जगह का नाम है. The death toll was about 20,000 people died. Okay, 20,000 people died, and the cause of the avalanche was earthquake. So अभी आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताई नहीं हूँ कि avalanche क्यों होता है. It could be because of an earthquake. It could be because of large sound. Sometimes कभी कुछ चीज़ तोड़ने के लिए बड़ी बॉम्बार्डिंग की जाती है पर्टिकुलर रीजन को, अगर स्टोन्स वगैरह को माउंटेन को कट करना है तो उस वजह से भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है वहाँ, उस वजह से भी एवलांच गिर सकते हैं. अर्थक्वेक अगर आता है ज़मीन में, या फिर स्मॉल अगर हल्की सी भी वाइब्रेशन होती है अर्थ में या माउंटेन के अंदर, तो इट विल लीड टू एवलांच. बिकॉज एवलांच क्या है, स्नो रीजन है, स्नो है, और स्नो को ज़रा भी धक्का लगता है तो स्नो नीचे गिरने लगती है, राइट. So this what it is very dangerous. The next disaster that we have is tornado. It is a violently rotating column of air that is in contact with both the surface of the earth and thunderstorm cloud. Now remember, here in this picture, if you see, you will notice that ज़मीन में भी वो attached है और आसमान में भी. अब एक्चुअली में वो स्काई से रिलेटेड नहीं है. देर आर क्लाउड्स, ओके, देर आर थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स. नाउ दीज क्लाउड्स आर अटैच्ड विद दिस ह्यूज कॉलम ऑफ एयर. एक बहुत तेज हवा चलती है, ऐसी कॉलम बना देती है, ओके, जिससे कि एक व्हील कैसे गोल गोल घूमता है, उस तरीके से ये कॉलम ऑफ एयर घूमती है, एंड इट कनेक्ट्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, okay, and the thunderstorm cloud. Everybody can see the thunderstorm cloud. All right. So extreme tornadoes can attain wind speed of more than 480 kilometers per hour and stretch more than 3 kilometers across. Okay, up 480 kilometers per hour, it is a very dangerous speed. Okay, हमारे जो ट्रेन्स हैं, हमारी जो बसेस, हमारी जो व्हीकल्स चलती है, if I'm just giving an example of a bike or an Activa, when you ride that bike, उसके ऊपर जब हम लोग 110 किलोमीटर्स पर आवर जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है बाइक्स पे, तो यू फील वेरी scared because the air flow, it is so high on your face, it hits so high. So you can imagine, अगर ये चीज़ यही स्पीड को 4 गुना बढ़ा देंगे हम लोग, तो वो कितना डेंजरस हो सकती है. वो हवा उतनी स्पीड में अगर किसी को लगेगी या कोई भी चीज़ उसके रास्ते में आएगी तो वो टूट जाएगी. ओके, देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर ये टॉर्नेडोज के अंदर पूरे पूरे जो कार्स है, कैटल्स है, ये भी उनके साथ में उड़ जाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन दैट अकर्स मोस्टली इन यूएस. ओके, नॉट इन इंडिया. टॉर्नेडोज के बारे में ज़्यादा इंडिया में ऐसे केसेस नहीं हुए हैं. ठीक है, इतना डेडली नहीं हुआ है कि लोग मर जाएं. Alright, so the deadly occurrence has taken single in Bangladesh in 1989. The death toll was 1,300 people died, and multiple tornadoes takes place in US. That was in 2011. 211 tornadoes at a time in 24 hours had occurred. ठीक है, सिंगल टॉर्नेडो मतलब ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक सिंगल टॉर्नेडो है. इस तरीके के समझ लो, अगर 211 टॉर्नेडोज है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो कितनी तबाही कर सकता है. ओके, नाउ रिमेंबर, पीपल कैन डाई ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट. अगर लोग आते हैं, कार आती है, कैटल्स आते हैं, तो वो भी मर सकते हैं. बिकॉज ये वॉल्यूम ऑफ एयर कितने स्पीड से घूम रही है और कितने दूर ये फेंकेगी किसी को, हम लोगों को पता नहीं होता. ऑलराइट, सो आई होप टॉर्नेडोज क्या है वो भी सबको समझ में आ गया होगा. Next you have is hurricane. Now this picture that you see, this picture is of a it is taken from the satellite. ठीक है, ये अर्थ के सरफेस का फोटो लिया गया है, बिकॉज हरिकेन को हम लोग ऐसे नॉर्मली खड़े रह के देख नहीं सकते कि कैसे दिखता है वो. हरिकेन्स आर जायंट. टॉर्नेडो क्या था, एक हम लोगों को कॉलम ऑफ एयर दिखाई दे रहा था, बट हरिकेन्स आर जायंट, दे आर वेरी ह्यूज. सेम थिंग ही है ये भी, but there are few things more in this. Okay,
दिस इज स्पाइरलिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ये भी वैसे ही स्टॉर्म्स मतलब आंधी तूफान जो आता है ना, वो हम लोगों को सीधा हिट करता है। मतलब समंदर से अगर हवा आ रही है तो हमारी सिटीज में हवा लगेगी, बट दीज आर मूविंग विंड्स, मतलब ये गोल 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 घूमता है। ठीक है, ये स्टॉर्म है ना, गोल गोल घूमता हुआ आता है। दे कैन पिक अप विंड स्पीड ओवर 257 किलोमीटर पर आवर and can cause over 9 trillion liters of rain per day। मतलब ये स्टॉर्म सिर्फ हवा नहीं चलती, इसके साथ में बारिश भी होती है। The center, also called the eye, remains notoriously calm. Now here you can see this center hole like thing, that is called as the center of the hurricane. Now this region wherever it is calm, but along with this इसके आसपास में जितनी भी जो आप लोगों को जो white layer दिखाई दे रही है, these are all clouds, okay, and the clouds keep on moving and there is rainfall and there is a high speed wind which is blowing, which causes a huge damage to the people around in that particular region। पूरे पूरे घर उड़ जाते हैं लोगों के if there is a hurricane which takes place। और उसके साथ में बारिश भी इतनी होती है which also adds to the loss that could which could create loss in that particular region। All right, here you have flood। We have learned a lot about flood, okay, so just a small detail about something interesting about what happens in flood। There are types like overbank river, that is overflowing of the river। Sometimes suppose अगर dams open कर दिए जाते हैं तो जो suppose there is a very serious condition in the dam, उन लोग को डैम खोलना ही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और डैम उतना स्ट्रेस नहीं ले पाता है, तो what do they do is they open out the dams and that also leads to overbanking flooding। ठीक है, जो साइड के जो समंदर के जो रिवर्स के साइड में जो घर है वहाँ पर ये नुकसान बहुत होता है। फ्लैश फ्लड, that is rapid rise of fast moving water, suddenly the water flow बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो that is one more type of flood, that is flash flood। Coastal flooding, that is caused by storm surges and ocean waves। Now remember we have learned about tsunami also। जब ये waves बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सपोज इंटेंसिटी डिफरेंट होती है सुनामीज की भी और अर्थक्वेक्स की भी, तो जिसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती है समंदर के अंदर भी, एंड दैट आल्सो कुड लीड टू कोस्टल फ्लडिंग। फ्लड्स कॉज्ड बाय इंजीनियरिंग इश्यूज आल्सो। ठीक है, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं डैम्स में या फिर कुछ अगर कुछ चीज़ टूट जाती है इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स की वजह से, तो दैट आल्सो लीड्स टू फ्लड। Volcanic eruptions. Volcanic eruptions happen when lava and gas are discharged from a volcanic event. Eruptions may be explosive, where fragmented lava explodes out of the vent, or effusive, where lava flows like a thick sticky liquid. Now here you can see that the lava is bursting out from the mountain. So this could be either the lava, depending upon the condition inside the mountain, okay, the volcanic eruption. It could be the lava coming out and in the form of an explosion, जैसे फटकर वो लावा बाहर गिरेगा, या फिर वो क्रैक्स डेवलप करके माउंटेन के अंदर से वो फ्लो होता रहेगा नीचे। ठीक है, so volcanic eruption everybody knows why it is very dangerous, because it's a hot molten lava। ठीक है, हॉट मोल्टन लावा मीन्स व्हाट, यू हैव लर्नड के जो सर्फ हमारा जो अर्थ है उसके अंदर जो लेयर्स है वहाँ पर मोल्टन लेयर्स, मोल्टन मतलब एक पिघला हुआ लेयर भी है, एंड इट हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इट कम्स आउट, दिस मोल्टन मास विच इज कमिंग आउट, इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट वेरी हॉट, पीपल डाई, उसकी वजह से फायर लग जाती है, लोगों के घर जल जाते हैं, and it causes a huge chaos in that particular region wherever volcanic eruption occurs। The deadly occurrence had taken place in mountain Tambora in Indonesia in 1815, and the death toll was about 7,100। Okay, so sorry, it was 71,000, not 7,000। So you can imagine 71,000 लोग सिर्फ एक volcanic eruption की वजह से die कर सकते हैं।
Nowadays there are techniques where people do not settle near that particular area where you have active volcanoes. ठीक है, तो इसलिए अभी ये जो हादसे होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लोगों की जो डेथ टोल है बट कम हो गई है, बट still there is a fear of volcanic eruptions which could lead to a disaster. The next disaster that we're talking about today is drought. Drought is a continuous period of dry weather caused by lack of rain. It can last over a month or even years. It's a disaster that takes place slowly, causing famine and even creating deserts. So famine is a condition जहाँ पर बुरी तरीके से बिल्कुल पानी नहीं पहुँचता, बारिश नहीं होती कई महीनों तक, and that leads to dry lands. And if you see here, the dry land over here, it is not capable of producing any food items, right? कोई ट्री नहीं उग सकती, कोई झाड़ नहीं उग सकता, एनिमल्स को खाने के लिए प्लांट्स नहीं होते, ह्यूमंस को भी खाने के लिए कोई मीन्स नहीं बचता. तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन, बिकॉज पानी तो है ही नहीं, उसके साथ साथ खाना भी नहीं होता है लोगों के पास खाने के लिए, एंड दैट इज फैमिन एंड दैट इज ड्रॉट. ओके, फैमिन क्या होता है? जब सूखा पड़ा होता है, बिल्कुल पानी और खाना नहीं होता है लोगों के पास, उसे फैमिन कहते हैं. एंड ड्रॉट इज अ कंडीशन जहाँ पर बारिश नहीं होती एक पर्टिकुलर रीजन में फॉर many months or sometimes even years also. Okay, कि कुछ साल एक मतलब अगर बारिश हो भी रही तो इतनी हो रही है कि it is not sufficient for that entire area, and that is what is drought. Next you have is wildfire or forest fire. Now uncontrolled fire in combustible vegetative area, that is forest, that occurs in the countryside. Sometimes you must have seen it when you're going to your villages or somewhere in the mountain region also, you must have seen that there is fire. It depends कि वो fire कितनी intensity की होती है. Sometimes it is huge. Now previously also in few months back also, last year also, we've heard about a forest fire, and we have seen that it had continued for several days. और उसे बुझाना आसान नहीं होता, because there is wood, there are dry leaves, and there is plenty of oxygen, which adds to what? Which adds to the fire, and that way the fire can go on for many days. And because of that fire बहुत सारी problems होती हैं वहाँ पर, animals मर जाते हैं, plants मर जाते हैं, and the amount of smoke which comes out is huge, which add in to the pollution in the entire in the environment. Okay, now this could be a reason, because natural reason also. सपोज कभी किसी ने प्लांट की जो ड्राई लीव्स होते हैं वो एक के ऊपर एक रब होने से भी स्पार्क जनरेट होता है, और उससे भी वाइल्ड फायर लग सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन रीजंस लाइक अनअटेंडेड कैंप फायर, लोग जो कैंप फायर करने जाते हैं और वहाँ पर अगर आग का ध्यान नहीं देते तो दैट कुड ऑल्सो लीड टू अ फॉरेस्ट फायर, सिगरेट बट्स एक्सेट्रा. लाइटनिंग कुड बी वन ऑफ द रीजन. ठीक है, जब बिजली गिरती है तो उसमें से जो आग जो स्पार्क निकलती है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. Okay, spontaneous combustion in a very hot and dry climate could also be a reason for forest fire. Let us understand the types of disaster. In our previous video, in our previous slide, you have seen about the various different types of disasters. Now we will see the types of disaster के disasters के types क्या है और उसके अंडर में कौन से disasters आते हैं. ठीक है. So the very first thing that we're going to talk about is the types. There are three types that we're going to discuss: geophysical, man-made and biological. तो geophysical के अंदर कौन से आते हैं, man-made के अंदर कौन से आते हैं और biological के अंदर कौन से आते हैं. Now geological के अंदर example is earthquake, volcano, tsunami, landslide, landfall, erosion, alkalization, flooding, etc. मतलब जो हमारी जो जोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ज़मीन है, पानी है, आसमान है, इससे जो भी रिलेटेड है वो जियोलॉजिकल के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक, दैट इज एग्जांपल इज हॉट एंड कोल्ड वेव्स, स्नोस्टॉर्म्स, snowfall, cyclones, hailstorm, drought, flood, meteorites, sunspots, etc. Okay, these are all coming under geophysical disasters.
Man-made disasters are very dangerous. Okay, it could be atomic, unknown poisonous gases, atomic test, unplanned action, accidents, international wars, fire, bomb blast, forced migration, terrorism, rapes, child labor. Okay. Next we have is biological. Biological means जो naturally occurring है. अब ना geophysical is also naturally occurring, but there is a extent to which it is, how it spreads and how it occurs. जियोफिजिकल के अंदर बेसिकली लैंड वाटर इज रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, सुनामी है, वाटर जो हमारा रेनफॉल है वो कितनी ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्लड हो सकता है, साइक्लोन है, ठीक है, ये हमारा जियोफिजिकल है। मैन मेड के अंदर वॉर है, एटॉमिक बॉम्ब्स है, पॉइजनस गैसेस है। नाउ लास्ट ईयर ऑल्सो वी हर्ड अबाउट के केमिकल इंडस्ट्री में से एक गैस लीक हो रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग मर भी गए। Okay, so that is a biological disaster. Sorry, it is a man-made disaster, which is an unknown poisonous gas which is causing death of many people. Okay, you have learned about Bhopal gas tragedy, we have learned about Chernobyl. Now these are all man-made disasters. All right, let's come on to the biological disaster. In this you have animal infections, uh, viruses, then you have bacteria which are causing diseases like cholera, malaria, dengue, plague on a large scale. बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं. Now you have COVID, कोरोना वायरस जो चल रहा है वो भी एक तरीके का बायोलॉजिकल डिजास्टर ही है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफेक्ट कर रहा है, राइट, और लोगों की जान भी जा रही है. Bites of poisonous animals, etc. Then you have also plant, example forest fire, fungal diseases spreading, weed, aquatic, and different types of plants which are there in the water also, they are also causing problems in that particular area. Okay, so these are not very much related to the land or water. These are related to human, these are related to animals and plants. All right, so I hope this much is clear. Let us see a few general effects of a disaster. There is loss of life. We all know that कि अगर डिजास्टर अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा तो लोग मरते हैं, ठीक है, we have seen that. Then there is injury. अगर लोग जिंदा बचते हैं, कुछ लोगों के ऊपर लोगों को मार लग जाती है. Some are very severely injured also. Damage to and destruction of property. लाइक जो हमारे घर है, ऑफिसेज है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, वो सब डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है बिकॉज ऑफ अ डिजास्टर. डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन, डिसरप्शन ऑफ लाइफस्टाइल, जो हम जी रहे हैं जिस हिसाब से जी रहे हैं वो खराब हो सकती है. लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लोग अगर ऑफिस बंद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे तो लोग कमाएंगे कैसे, ठीक है, तो उस वजह से हमारे पैसे कमाने के जरिए भी कम हो जाते हैं. Disruption to essential services like suppose railways है, waterways है, railways है, airways है, अगर stations है खराब हो गए हैं due to earthquake, अगर पटरियाँ निकल गई है, जो भी है, ठीक है, इस वजह से भी essential services affect हो जाती है. Damage to national infrastructure, as I told you कि हमारी सिर्फ घर की प्रॉपर्टी ही नहीं, बाहर जो प्रॉपर्टी है, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज हो सकता है. डिसरप्शन टू गवर्नमेंटल सिस्टम एज वेल, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बॉडीज है जहाँ से हमारा सारी चीज़ें चलती हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द डिजास्टर. नेशनल इकोनॉमिक लॉस, हमारा तो लॉस होता ही है. अलॉन्ग विद दैट नेशनल, हमारा जो इंडिया है उनका भी, जो भी कंट्री में डिजास्टर्स होते हैं उनकी पूरे नेशन का भी इकोनॉमी लॉस होता है. इकोनॉमी मीन्स पैसे के मामले में हम लोग फिर से पीछे हो जाते हैं, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो यू हैव सीन दैट कितनी सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं कोविड से, लाइक लॉस ऑफ लाइफ, लोग मर रहे हैं, कुछ लोग बहुत मतलब सीरियस कंडीशंस में हैं. देर आर पीपल हु डू नॉट हैव प्रॉपर फूड टू सर्वाइव, मतलब काम नहीं है उन लोगों के पास, तो उसकी वजह से हम लोग खा पी नहीं पा रहे हैं, वो लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे जो हम लोग ऑलरेडी पहले जीते थे, ठीक है. उसके साथ साथ जो हमारा नेशन है
उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इकोनॉमिक लॉस अभी भी चल रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आफ्टर एन अ डिजास्टर। मतलब अगर एक इंसान को डिजास्टर में अगर इंसान ने कुछ नोटिस करा है, लाइक सपोज इफ ही हैज सर्वाइव्ड एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में अगर आप लोग बच जाते हो, तो उसके बाद में जो इफेक्ट होता है, जो ट्रॉमा होता है, इंसान को बार बार वो चीज़ें याद आना, और उसकी वजह से भी लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर इफेक्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। टेक एनी वन डिजास्टर एंड रिलेट टू दैट कि इससे क्या क्या लॉस होता है, और उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं जो जनरल इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स के। So here in this picture, you can see that because of various types of disaster, what are the effects that happen. Here in one picture, you can see that because of the forest fire or wildfire, the animals become homeless and there is a huge amount of smoke which adds to the environment and which leads to pollution. Okay, apart from that, we have also seen, you can see floods also, right, which is affecting again humans. It is destroying the entire city and the infrastructure gets destroyed. You cannot see the roads, लोग चलने के लिए, जाने के लिए, आने जाने के लिए जगह उन लोगों के पास means नहीं है, services खत्म हो गई है, right? Apart from that, प्लान अगर किसी तरीके का मैन मेड डिजास्टर या ऑयल स्पिल्स वगैरह पानी में गिरता है, तो उसके वजह से भी एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक में भी ऑल कैन सी, volcanic eruption में भी all can see. All these things are few examples of how the disasters are affecting humans and animals as well. We have learned that planet Earth has experienced many natural disasters. Listening to the description of those disasters brings numbness to the mind. We have heard about so many different types of disasters up till now, and people dying because of the disasters, and that hurts us somewhere down in our heart. We feel so helpless because we cannot help those people if they are far away from us, right? Most of the disasters and related unprecedented situations have occurred in the Asian continent and region of Pacific Ocean. Huge loss to the life and the planet Earth has been occurred due to such disasters. Generally, such conditions of natural imbalance have been arising due to greed of economic progress of human beings. Now I've explained you that because of human activities also earthquakes can take place, avalanche can take place, ठीक है, फ्लडिंग हो सकती है हमारी गलतियों की वजह से, बट इस ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी गिरा देती हैं। एंड वाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज वी वांट टू ग्रो एंड वी वांट टू बिकम रिच, ठीक है, नॉट अस। इवन द गवर्नमेंट टेक्स plays a very important role in all these things. So we have to understand कि जो disasters होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंसानों naturally ही होते हैं. It could be because of man-made reasons also. And man-made reasons क्यों होते हैं? Because of ever increasing population, हम लोगों को सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसकी वजह से forest cut down हो जाते हैं, right? और that could result in a less amount of rainfall in that particular region, और drought हो सकता है, famine हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। So I hope this much is understood. Now this is one of the reason that I was talking about, man-made reason, atomic reactions or atomic bombs. When I talk about atomic bombs, so you must have heard about Hiroshima and Nagasaki. When you talk about atomic bombs and atomic testing, these are one of the reasons which are very dangerous, and you have to remember about this कि over the years ऐसा हुआ है और बहुत लोग मरे हैं और उसका जो इफेक्ट है वो आज भी लोगों में प्रेजेंट है, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं लोगों के अंदर जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है वो उनमें भी डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। फ्रॉम द अटोमिक एनर्जी प्लांट, एग्जाम्पल रेडिएशन लीकेज अगर होता है अपार्ट फ्रॉम द अटोमिक बॉम्ब, ठीक है। अगर अटोमिक एनर्जी प्लांट जो होते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट अटोमिक एनर्जी, राइट? तो अटोमिक एनर्जी से अगर जो भी चीज़ एमिट होती है, रेडिएशन निकलती है, उसकी वजह से भी ब्लास्ट हो सकते हैं। और वी हैव सीन अबाउट, वी हैव हर्ड अबाउट चर्नोबिल। नाउ व्हाट इज चर्नोबिल? इज अ प्लेस इन रशिया वेयर ये अटोमिक
जो पावर प्लांट था वो बर्स्ट हो गया, दैट हैड गिवन आउट रेडिएशन, वो कुछ उनके अंदर डिफॉल्ट, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसकी वजह से वो एटॉमिक रिएक्टर जो था वो फट गया था और उसके अंदर से जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल था वो एक्सपोज हो गया था, एंड दैट लीड टू many difficulties in that particular region. Many people died due to cancer and due to exposure to radiations. Okay, and people over there have left that particular area where that happened, and over the years now also people do not go and settle in that region. ठीक है. Now there was a series called at Chernobyl, which was which helped us to understand about what exactly happened over there and how people suffered, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है लोगों को आफ्टर ये जो मैन मेड डिजास्टर्स के वजह से. ठीक है. Its ill effects are still experienced in the region. This atomic energy plant was only used for electricity generation. Nowadays, many countries are equipped with atomic energy. Out of this, risk of radiation leakage is increasing due to carelessness. Hence, importance of disaster management has become the foremost need for almost all the nations. So हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख के करना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इससे. ये जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं ये बहुत कम पैसे में, कम एक्सपेंसेस में हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है, तो इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आजकल. एंड जैसे ही ये एक बून है, एक तरीके का कर्ज भी हो सकता है अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो. ठीक है. Now this is what is भोपाल गैस ट्रेजेडी आई एम टॉकिंग अबाउट. Now भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, there was because of negligence. ठीक है, again because of negligence, humans, we did not take proper precautions. The people over there, the the person who was handling the factory in Bhopal did not was very careless, and because of that it led to Bhopal gas tragedy. People over there are still being born with defects. Okay, you can see this boy. Now these are a few examples of people being affected because of man-made disasters. Now impact of disaster, here you can see death, injuries, destruction of houses, damaged buildings like school, hospital, aged care, universities, shops, skyscraper, ये सारी चीज़ें टूट सकती है, डैमेज हो सकती है ना because of disaster. Roads are cracked, water, sewage and storm pipes are damaged, electricity and reception poles, cables are also damaged because of a disaster. इकोनॉमी रिकवरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लॉस ऑफ इनकम हो जाती है, डिजीज स्प्रेड होते हैं. एंड ओके, रिमेंबर दिस ऑल्सो कि डिजीज स्प्रेड भी ज़्यादा होता है आफ्टर अ डिजास्टर, बिकॉज अगर फ्लड आए हैं तो अलॉन्ग विद दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस प्रेजेंट इन द वाटर विच कुड लीड to disease spread as well in that particular region. Government has to rebuild and spend more in that region, तो उसकी वजह से भी government का भी loss होता है. Government has to supply money to people. Other areas of the economy also suffers. Businesses cannot run properly because of a disaster. If you like the session, please do not forget to subscribe to our channel so that you can share, and this session was quite useful to you. In the next coming period, we'll learn something new and interesting. Till then, thank you.